हेलो एवरीवन, आई एम सुशांत। वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ चेसिंग ड्रीम्स। स्टॉक मार्केट यानी शेयर मार्केट होता क्या है, हमने मेरे इस वीडियो में ये देखा था, लेकिन आज हम इस मार्केट को थोड़ा और बेहतर तरीके से जानेंगे। एक स्टॉक ट्रेडर होता क्या है, एक स्टॉक ट्रेडर कैसे बनते हैं, क्या स्टॉक मार्केट सच में बहुत रिस्की होता है? इन सभी सवालों का जवाब देने के लिए आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं मेरे दोस्त मिस्टर आकाश सोनी। आकाश एक एक्सपीरियंस ट्रेडर के साथ साथ फाइनेंशियल मेंटर और कंटेंट क्रिएटर भी है, तो चलिए उनसे मिलते हैं। Hi Akash, thank you so much for joining us today. Sure. Thanks Sushant, and thanks for the INFO MUSE team for having me. The pleasure is all mine. So आकाश, कुछ दिन पहले हमारे वीडियो के लिए हमने आपसे बात की थी कि स्टॉक मार्केट बेसिकली होता क्या है, ठीक है। लेकिन आज हम जानना चाहेंगे कि एक बेसिकली स्टॉक ट्रेडर होता क्या है, मतलब कौन होते हैं स्टॉक ट्रेडर? स्टॉक ट्रेडर एक वो इंसान होता है जो स्टॉक्स को एज अ बिजनेस ट्रीट करता है। बेसिकली स्टॉक्स आर नथिंग बट योर शेयर इन एनीवन्स कंपनी। जो भी पब्लिकली ट्रेडेड कंपनीज होती हैं, उनके शेयर्स को अगर आप बाय या सेल करते हो तो उस बाइंग सेलिंग प्रोसेस को हम लोग ट्रेडिंग बोलते हैं। एंड व्हेन यू इन्वॉल्व दैट स्टॉक इनटू इट, दैट बिकम्स अ स्टॉक ट्रेडिंग जर्नी और स्टॉक ट्रेडिंग प्रोफेशन। एंड जो भी ये प्रोफेशन फॉलो कर रहा है, जो कंपनीज के शेयर्स को खरीद बेच रहा है, दैट इज व्हाट अ स्टॉक ट्रेडर इज। नाइस, अमेजिंग। सो एक स्टॉक ट्रेडर, जैसे आपने इस ट्रेडिंग के बारे में बताया कि बेसिकली वर्ड ट्रेडिंग इटसेल्फ मींस कि कोई खरीदना बेचना। सो जो इंसान स्टॉक्स की खरीदी और बिक्री करता है उसे हम स्टॉक ट्रेडर कहते हैं। सो स्टॉक ट्रेडर बनने के लिए किन क्वालिफिकेशंस की जरूरत पड़ती है? I'll tell you, if you think about stock trading, so there could be two types of traders, right? One can be an individual trader जिसने खुद से ट्रेडिंग करनी है, and one can pursue this as a corporate profession. Right? So corporate profession अगर आप करते हो, if you thinking about managing big funds, you are thinking about being someone जो बड़े बड़े पैसे मैनेज करता है बाकियों के institutions के. So for that you need a finance degree. For that you need various type of financial degrees including CFA, economics में आपको आना चाहिए. You should be well versed in applied finance, and you have different schools. For example, National Stock Exchange of India, उनका खुद का कॉलेज है where they teach you everything about equities and derivatives, right? That is one part. So if you want to be a corporate trader, if you want to work as a corporate but not trade your own money, so आप वहां पर जा सकते हो. But if you want to trade your own money, आप खुद से ट्रेड करना चाहते हो, so that really doesn't require any qualification as such. You just need to be 18 years old. You should have a legal bank account. You should have a legal bank account which is at least 6 months old. You should have a cancelled check and a PAN card. That's it. That's it. That's amazing. So अगर समझिए किसी कॉर्पोरेट इंस्टीट्यूट को अगर ज्वाइन करना होगा तब हमें प्रॉपर क्वालिफिकेशन या डिग्री वगैरह की जरूरत पड़ती है। तो जैसा आपने कहा कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया का खुद का कॉलेज है, तो वो लोग 12th स्टैंडर्ड के बाद ज्वाइन करते हैं या फिर उसके लिए प्री क्वालिफिकेशंस क्या रहता है? No. There are various types of courses in that. आपके पास डिप्लोमा कोर्सेज होते हैं, आपके पास फुल फ्लेज्ड डिग्री प्रोग्राम्स होते हैं. सो डिपेंडिंग ऑन दैट, डिपेंडिंग ऑन व्हाट कोर्स यू चूज, आपके एंट्री क्राइटेरिया होते हैं. बट बेसिक एजुकेशन इज 12th. Okay. Yeah. So after 12th you can start applying. You can see where you fit and you can do that accordingly. और अगर अपने पास समझे अगर कोई इंडिविजुअली इन्वेस्ट करना चाहता है, ट्रेड करना चाहता है, तो फिर बस वो अपना, जैसे आपने बेसिक रिक्वायरमेंट्स के बारे में बताया, बैंक अकाउंट, डीमैट अकाउंट एंड ऑल, और उसके बाद अगर आपके पास नॉलेज है, अगर आप उतना रिस्क उठा सकते हो तो ट्रेडिंग करना बहुत ही आसान हो जाता है. सो ये तो हो गए फंडामेंटल क्वालिफिकेशंस के बारे में, लेकिन मैं जानना चाहूँगा कि इन सभी टेक्निकल क्वालिफिकेशंस के अलावा किसी स्पेसिफिक स्किल की जरूरत होती है क्या ट्रेडर बनने के लिए? When you talk about skill, obviously there is a difference between qualification and skill. आप किसी चीज के लिए क्वालिफाई करते हो मतलब ये नहीं कि आप उसमें अच्छे हो. When you talk about skill is nothing but you should be very much stable at your mind. You need peace at your mind. That is very first thing, because mindset plays a very important role in stock trading. Because जब आप अपना खुद का पैसा लगाते हो, there are very much big fluctuations in the stock market, and you should be able to control your emotion, and for that you need a stable mind. That is one skill. Another skill is you should have a basic sense of business. एक basic business कैसे
इंसान रन करता है, अपने ऑपरेशंस कॉस्ट कैसे लो करता है एंड आउटपुट कैसे ज़्यादा मैक्सिमाइज करता है. इफ़ यू हैव दिस बेसिक सेंस आप ट्रेड कर सकते हो. Secondly, you should be able to use some technical stuff. You should not be able to write code or something, but you should be a little technical. Means you should be able to use a laptop, Chrome specifically, any web browser, Chrome, Firefox. You should be able to use a calculator. And I'll tell you, Shushan, people say कि यार maths अच्छे से आना चाहिए, but people who know maths don't know how to use calculator properly. And calculation, basic percentages, basic calculations are very much important. Additional skill would be just to improve would be an Excel. अगर आपको Excel आता है, you can keep a back record of what you have done and how you are proceeding with all the trades which you are doing. So basically these are the skills you should. डिजिटल लिटरेसी और बिजनेस सेंस, ये दो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है इसके लिए. और प्लस अपने लिमिटेशंस पता होना कि लाइक लालच नहीं आना चाहिए. आपने जैसे कहा कि ग्रीड कैन बी वन ऑफ द बिगेस्ट लूजिंग फैक्टर. हाँ, कि डाउन टू द इमोशंस पार्ट, राइट. अब एक्चुअली आई टेल यू सुशांत, you should be greedy because you are here for money, right? But on what point you should be greedy, at what point you should be scared, at what point you should be taking risk, that will only come with experience. सो स्टॉक मार्केट के लिए एक और चीज़ बहुत लोगों से सुनी थी और ऑब्वियस ही बात है, जो लगता है लोगों में, और आज के लोगों में शायद मुझे लगता है कि वो चीज़ बहुत कम है, दैट इज़ पेशेंस. ओके, सो एवरीवन थिंक्स दैट स्टॉक मार्केट इज़ अ गेट रिच स्कीम, जहाँ तुरंत आए भाव आज पैसे लगाए और कल से अपना बोलते हैं ना 25 दिन में पैसे डबल होने लगने वाले हैं, वैसे उस तरीके की स्कीम के लोग एक्सपेक्ट करते हैं. सो पेशेंस कितना इंपॉर्टेंट रहता है स्टॉक मार्केट के लिए? सी दैट रियली डिपेंड्स सुशांत. I have seen and I have worked with people who trade at least like not more than once a year, and they make a hell lot of money. So that really depends on what type of trader you are, basically. See, patience is really important in investing, but when you consider a trader के पास patience तो होना चाहिए, because you should be able to hold your winners and cut down your losses. वो एक बिजनेस सेंस से आता है, प्लस यू नीड दैट पेशेंस कि आप अपने विनर्स को लंबा होल्ड कर रहे हो. बट देयर आर ऑल्सो ट्रेडर्स हु ट्रेड फॉर लिटरली सेकेंड्स एवरी डे, सो दे डोंट नीड दैट पेशेंस वाला हिसाब, राइट. सो अ ट्रेडर ऑल्सो कैटेगराइज हिमसेल्फ एज बेसिकली मेजरली 3 types. One is a scalper, one is a day trader, and one is a swing trader or positional trader, you say. So I'll tell you the difference in them. A scalper is someone who trades for 10-20 seconds. Like उसका मेजर काम है कि वो छोटी छोटी मूव्स ज्यादा क्वांटिटी में कवर करे. Like let's say I buy 20,000 shares of something. Like I buy 20,000 shares, or let's not say shares. I buy 20,000 bananas, right, for 20 rupees. And as soon as the price goes 22 rupees, I sell all of those 20,000 bananas. So I made a profit of straight up 40,000 rupees just with the movement of 2 rupees, right? So in this case, I don't need to be patient. I need to because the quantity ज़्यादा थी. Yep, क्योंकि वहाँ पर quantity ज़्यादा थी मेरी. But if I am expecting the bananas price to rise over the time for the next 15-20 days, then I'll be a swing trader. मैंने आज खरीदा and I'm taking it for a month, 15 days, 20 days. That in that way I can capture bigger moves and I can relax myself. In that way I need that patience. And another one is a day trader. So he's only concerned with the movement happening within the day. कि आज जितना भी बढ़ेगा, that is my profit. So that he needs a patience of 2 hours, 3 hours, yes, let's say. डे ट्रेडर को इंट्राडे ट्रेडिंग बोलते हैं ना, जो लोग डे ट्रेडिंग करते हैं, लाइक सुबह जो या 9 बजे से दोपहर के 3 बजे, या जो 9:15 से 3:30 के बीच में जो ट्रेड कर रहे हैं, वही लोग इंट्राडे हैं. दैट इज व्हाट डे ट्रेडिंग इज बेसिकली. सो एक एस्पायरिंग ट्रेडर अपनी शुरुआत कैसे कर सकता है? समझो अगर किसी को ट्रेडिंग में इन्वेस्ट करना स्टार्ट करना है, लाइक ही डजंट इवन नो एबीसी ऑफ ट्रेडिंग, ही जस्ट हैव अ स्मॉल अमाउंट ऑफ मनी फ्रॉम विच ही कैन स्टार्ट. एंड आइडियली अगेन फ्रॉम दैट यही सवाल पूछना चाहूँगा कि आज के समय में बेसिक कितने अमाउंट की जरूरत पड़ती है ट्रेडिंग करने के लिए?
I'll come back to the first question first. I'll cover the first half. See, again, you have to decide what type of trader you want. See, and what do you want with trading? आपको stock trading से चाहिए क्या? Do you want it to become your full-time career? Do you want it as a part-time side income? Do you want your career, entire corporate life to be a trader? So, depending on these three, आपको अलग-अलग choose करना पड़ेगा. So if you want to be a corporate, as I said, you have to have that economics degree. You have to have certification in different types of finance, like applied finance, Google spreadsheets, and then you have diploma courses of NSE. And वहाँ पर आपको डिग्री चाहिए जहाँ पर आप दूसरे का पैसा मैनेज करो. So you are basically not a trader, but working as a trader by doing a job of a trader, right? आप सिर्फ accounts handle कर रहे हो. You are working on orders, and that is a different life as a trader. Another one is if you want to individually invest your own money, right? So वहाँ पर आपको basically you don't need any qualification. आपको सिर्फ थोड़ा सा tech savvy होना है, not tech savvy, basically digital literacy होनी चाहिए वहाँ पर, and in that way you can start, right? So for that you will require how to study price. You will require how to understand the functioning of a company and वो कंपनी कौन से टाइम पे किस तरीके से बेनिफिट कर सकती है आप. सो बेसिकली हमारे स्टॉक मार्केट में एक डे ट्रेडर को, इंडिविजुअल ट्रेडर को जो खुद का पैसा लगा रहा है, उसको 3 सवाल के जवाब बताने पड़ते हैं. द फर्स्ट क्वेश्चन इज कल कौन सा स्टॉक बाय करूं. There are more than 5,000 stocks listed in National Stock Exchange. So कल मैं कौन सा स्टॉक बाय करूं. So what should I buy tomorrow? That is the first question. At what price should I buy is the second question. Because Reliance का भाव कल भी कुछ अलग था, आज भी कुछ है, परसों भी कुछ होगा और उसके बाद कल भी कुछ होगा. Yeah. So what is that optimum price to buy that asset? What is that optimum price to buy that Reliance का share कि मुझे फायदा हो सकता है, right? You cannot buy a single banana for 400 rupees, right? That is crazy. क्योंकि आप यहाँ पर एनालाइज कर सकते हो बनाना को सामने देखकर कि यार this banana is not worth 400 rupees, right? But in case of stocks के केसेस में क्या होगा, आपको वो चीज दिख नहीं रही, right? For let's say India Mart मैंने बोल दिया, you will just see that name आपके स्क्रीन पे, you will not even know कि यार ये क्या करती है, how does it work, so is it overpriced or underpriced. So you should be having a knowledge of study price movements, right? That is known as price action. So आपको थोड़ा बहुत price action की जरूरत पड़ेगी. You should know the basic flow of money and price, जिसके ऊपर सारे के सारे prices depend करते हैं. So you should be having that if you want to be an individual trader, right? So then the third question is, at what time should I exit? So I'll tell you a small story. My dad bought Reliance shares for 90 rupees in 1999 at 9 rupees per share. So he bought 10 shares and that 10 shares are now worth somewhere around 27,000, and which is a phenomenal return, right? He invested 90 rupees and he has converted that 90 rupees into 27,000. 27,000. My God. Yeah, 27,000. That is a phenomenal return, right? But अब यहाँ पर people fail to understand that ये करने के लिए उनको 22 साल लग गए. 22 साल, 22 years, more than 2 decades, right? That is a very big time. So the return he made is significant, but that amount which he got in 2022 is not as significant, is not as relevant, because 27,000 because 99 rupees in 1919 rupees in 90s जब उन्होंने खरीदा होगा तो उसकी वैल्यू अलग होगी, और आज के समय में 27,000 की वैल्यू मतलब शायद उतनी ना रहे. Because that is all inflation adjusted, right? अब यहाँ पर people fail to understand. So this is a phenomenal return, but वो phenomenal return का significance कम हो गया. But वो टाइम पीरियड की वजह से हाँ. But अगर मेरे पापा ने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए रहते, I would have left everything and मैं आज राजाओं की जिंदगी जीता, right? And you will see a lot of Instagram post और बाकी जगह पे सोशल मीडिया पे
कि यार आपने इतने पैसे डाले रहते तो आज आप इतने हो जाते, बट फिर मेरे पापा ने 90 रुपीज क्यों डाले? बिकॉज दैट इज द मैक्सिमम रिस्क कैपेबिलिटी जो मेरे पापा के पास थी उस टाइम पे, राइट? माय डैड कुड लूज 90 रुपीज एंड डोंट वरी अबाउट इट, राइट? बट आप समझो कि किसी ने तो 1 लाख रुपए डाला है वहां पर रिलायंस में, जिन्होंने आज फिनोमिनल रिटर्न बनाया। अब नाउ Reliance 20 years back was not a company which is Reliance is today, right? अभी I should not be saying this, but मुकेश सर ने उठा दी, अनिल अंबानी भी थे उनके साथ में, right? साथ में थे, हाँ। तो अनिल अंबानी वाला केस भी हो सकता था। He could have the Reliance could have gone bankrupt if it was not for Mukesh, right? हो सकता था 99 रुपीज की वजह से ये जगह 9 रुपए भी ना मिलते। बिल्कुल, एग्जैक्टली। बिल्कुल, या। बेसिकली स्टॉक मार्केट इज अ गेम ऑफ अनसर्टेनिटी, राइट? अगर आप कोई भी, लेट्स से अगर आप कैफे भी खोलते हो, आई टेल यू 2022 में यू विल नीड एटलीस्ट 10 लाख रुपीज टू स्टार्ट अ कैफे। यू विल नीड अ प्लेस, आपको रेंट भरना है, आपको स्टाफ मैनेज करना है, आपको फर्नीचर चाहिए, आपको किचन चाहिए, किचन के इक्विपमेंट। यहाँ पर क्या होता है, एवरीथिंग यू डू is liquid. Liquid का मतलब मैं बताता हूँ, is free flowing. If I am investing 10 lakh rupees in stock market या मैं उसके साथ ट्रेडिंग करना चाह रहा हूँ, तो I have that 10 lakh rupees in hand. वो पूरा कैश मेरे पास है, and that is what I am using it to make more money. So in that way case, money makes more money, right? So आपको कैपिटल डालना पड़ेगा, ये liquid capital, so you have an advantage because you can control the risk. There is something known as stop loss in our industry, जहाँ पर आप अपना लॉस डिफाइन कर सकते हो कि अगर मैं आज 5,000 रुपीज का रिस्क लेना चाहता हूँ तो मैं उससे ज्यादा रिस्क नहीं लूंगा, राइट? सो इन दैट वे इफ यू डू योर प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट एंड मनी मैनेजमेंट, सो यू कुड एक्सपेक्ट 10% of your returns, 10% of your capital invested. So let's say if I want to make 1 lakh rupees per month, I should have at least a capital of 10 to 12 lakhs in order to make that 1 lakh rupees per month consistently, right? So 10%, 6-7%, even if you are making 4%, 5% per month, जो बैंक आपको पूरे साल भर में देती है, अगर आप वो एक महीने में निकाल रहे हो, so you are a good trader. That's more than enough. Yeah. More than enough. सो आकाश, ये तो आपने बताया कि अभी अगर कोई स्टॉक ट्रेडर बनना चाहता है तो वो कैसे बन सकता है। आपको किसने इंस्पायर किया था एक स्टॉक ट्रेडर बनने के लिए? टू बी ऑनेस्ट, आई वाज रियली फॉन्ड ऑफ मनी. आई एम बीइंग कंप्लीटली ऑनेस्ट, एंड हु डजंट नीड मनी, राइट? Absolutely. Yep. And anyone who says that money doesn't buy you happiness has never, I'll tell you, he hasn't went to the right shop to buy. Because money does buy you happiness for sure, and it's more about the convenience which you get with the money. So I started out as a digital marketer. I used to build websites, and at that point in time I realized ki whatever work I'm doing, for let's say I'm working for 6 hours a day, so I'm getting only paid for that 6 hours, right? एंड मैं जितना काम करूंगा उतना मुझे पैसा मिलेगा। एंड यू शुड कीप दिस लॉजिक इन माइंड कि लेट्स से इफ आई अर्न 8 लाख रुपीज अ मंथ, राइट? 8 lakh rupees, not in a month, sorry, in a year. And I don't spend any of it, right? I save 100% of that 8 lakh. I don't pay taxes. मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने सिर्फ 8 लाख रुपए जोड़ा. And I keep on saving. And I did this for 10 years. I would save up to 80 lakh rupees. Would you agree? Yeah. And I saw someone driving a Range Rover. Which was around 2.4 crore rupees. I realized that doesn't matter कि मैं कितना भी मेहनत कर लूँ, it won't matter even if I save 100% of what I am earning. I'll not be able to buy that car in 10 years or 20 years. Yeah. Right? So there has to be something which I don't know,
and I need to take that out. So I started researching, like internet being our good friend, कि यार कैसे पैसा बनता है. And I had that initial capital because I learned from digital marketing. Digital marketing से थोड़ा बहुत कमाया था. So I wanted that कि यार these people are doing something to multiply their money, right? I started learning that stock market is a way where you can really multiply your money. अब maybe I was also of that mindset कि यार यहाँ पे जल्दी पैसा बनता है. So when I started how to make money online, this was one of the things. And at that point, so comfortable lifestyle for my parents, for myself, and to find that way how to multiply money is what attracted me towards stock market and finance in general. नाइस यार, नाइस, अमेजिंग. सो मतलब आपके एक्सपीरियंस में अभी तक जब से आपने शुरुआत की और अभी देख रहे हो, सो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इंडिया में स्टॉक मार्केट में क्या चेंजेस आए और आप फ्यूचर कैसा देखते हो, लाइक क्या हो सकता है, व्हाट आर योर एक्सपेक्टेशंस और योर एनालिसिस? I'll tell you, statistically speaking, this is not me. I might be a bit off, but I believe recently what I've studied, less than 5% of India invest in stock market, right? Which is way too less. But then also our stock market stands somewhere around 8th in the rankings of the biggest traded. We call it a volume. कि कितना वॉल्यूम जनरेट हुआ है, कितने रुपए का धंधा हुआ है, इज बेसिकली हिंदी में कि कितने रुपए की सामान खरीदा बेचा गया है. तो in terms of volume we rank the 8th and amongst just by 5% of people investing in money, like investing in stock market. और ऐसी बात नहीं कि बाकी के लोगों के पास पैसे नहीं है. लाइक आवर कंट्री इज अ वेल्दी कंट्री, ओके, वी आर लाइक, हम कल्चरली रिच है, वेल्दी फैमिली, जो भी हमारे ऊपर ओवर पीरियड ऑफ 200 years ब्रिटिश के द्वारा हुआ, इवन आफ्टर दैट वी अपने पैरों पे खड़े हुए वापस कमाया. लेकिन बस वही है, मुझे लगता है कि अवेयरनेस शायद नहीं होगी लोगों के बीच में या लोगों के बारे में कि भाई इन्वेस्टिंग क्यों करना ज़रूरी है. बट स्टिल with that just 5% population, we rank like 7th or 8th in the world, and that's a really big thing. I think it's a very proud thing for us. Yep. And taking that perspective, US I believe stands at the topmost, and their 50% of the population invest in stock market, more than 50, and the numbers might be a bit off, but इस तरीके का हाल है. So the potential we have is really huge. So what happened was, before COVID, before this 2 years lockdown, it was all running smooth. जैसा चल रहा है, people were coming, people were going. But what I have recently witnessed, and which is a witnessing growth, is the lockdown period. You see, lockdown period was tough on many people, right? All the traditional businesses went absolutely, they were halted, right? So there were only 2-3 things running in this country. One were hospitals, medicals, that profession, and the other one was this stock market. Because you see, stock market से एक country को बहुत ज़्यादा फायदा होता है. Because in basic terms, for every trade which happens, the government takes a cut out of it. That is known as a brokerage, that is known as a commission, as a tax that you are earning profit. So that was never halted, because you can do it with just your internet and a laptop. So आप कहीं से भी कर सकते हो, वो mode of freedom है आपके पास, आप कहीं से भी कर सकते हो. So that is why this industry saw a very huge boom